And how are you guys? I hope you are doing great, guys. So finally, we are about to finish the first chapter, right, of class 10th mathematics. बट एक्चुअली ऐसा है कि अभी हम लोग जो है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सा थोड़ा सा और कुछ डिफिकल्ट लेवल की चीजों को देखने वाले हैं. ठीक है. सो लाइक द नेक्स्ट टू लेक्चर्स आर गोइंग टू बी समथिंग विच इज बियॉन्ड द whatever is given in your NCERT books, right? So far, guys, you have been learning how to find the LCM and HCF of numbers, right? Numbers means, and let's say if I'll ask you to natural numbers, I will say in that way, right? Let's say if I'll ask you to find the LCM of 5, 25 and 35, least common multiple, right? So you will tell me the answer. You will solve and you will tell me the answer. You know how to solve it, right? In fact, if I'll ask you to find the HCF also, you will find that as well. That is something you will have been doing earlier. But what if I'll ask you to find the HCF of 1 by 2, 3 by 2, and 3 by 8? So basically, I'm talking about the HCF of a fraction, LCM of a fraction. Or also today we are going to discuss, first of all, definitely this kind of questions we are going to discuss. Second thing, we are also going to discuss, when you have that kind of thing, that questions based on the LCF and HCF. And I'll tell you one thing, guys. LCM, LCF, and LCM and HCF based question. These questions have been, asked many a times in your higher level exams. For example, CAT. I hope you heard about CAT. No? Okay. CAT is common aptitude test, right? Okay. Common aptitude is, this is aptitude test for MBAs, right? If you want to go to IIMs, you have to qualify the exam of CAT. In CAT, these kind of questions comes. Okay. Let's do it then. Okay, guys, just a second. Let me share my screen and we're gonna start it then in a while. Just a second. Okay. So I hope my screen is visible to everyone. Is that so? Just a second. I hope it's visible, right? Let's start a slideshow then in that case. Yep. Okay. I'm starting a slideshow. Just give me a second, please. From the beginning, I'll do. Absolutely. Yeah. So real number. 10 class 10 first chapter, 6 marks weightage. We know about that already. Today we are going to cover two topics, I would say. LCF and HCF, LCM and HCF of rational numbers, and we are also going to cover the advanced problems and the remainder problems based on the your HCF and LCM, the CAT level problems, right? Just give me a second. Let me plug in my laptop. Just a second. Okay, it's fine. Okay, guys, let's start then. Yeah. So look, what are the two concepts we have to understood? When we have to find the LCM of fraction and we have to find the HCF of fraction, what you will look. So let's say you have a lot of fractions over there. Let's say the fraction is 1 by 2, 2 by 5, and 6 by 7. Guys, the first thing is that if I'll ask you to find the HCF of these three fractions, right? Okay, to get the HCF of the fractions, what you will do? You will find the HCF of the numerator and then you divide it by LCM of the denominator. I mean, like, you have to find the HCF. So in the numerator, for numerator, you will find HCF only. Okay. Now, for example, let's say if you have to find the LCM, what you will do? You will find the LCM of numerator this time. And then the remaining thing you will get for the denominator, right? So it's a very simple process or formula. You can understand like that very simply. Basically, if you are finding the HCF, okay, then for the numerator, you will find the HCF only. And for the denominator, you will find the second thing, that is LCM. If you are finding the LCM, then for the numerator, you are going to find the LCM, and for the denominator, you are going to find the HCF. Okay, fine. Getting what I'm saying? I'm repeating my point again. Look, some fractions are given to you. You have to find the HCF of the fractions. Okay, so HCF of the fractions would be equals to HCF of the numerators divided by LCM of the denominators. On the other hand, if you want to find the LCM, what you will do? For the numerator, you will find the LCM, and for the denominator, you will find the HCF. Got it? I think if we solve a few problems, you understand it more, right? So look at the problem is over here only. You have the three fractions, 1 by 2, 2 by 5, and 6 by 7, right? We have to find the HCF. So what I'll do, as I told you that you have to find the HCF of the numerator. What is the numerator? 1, 2, and 6. You have to find the HCF of them. And then you have to find the least common multiple of 2, 5, and 7. Now, what is the HCF of 1, 2, 6? 1. What is the LCM of 2, 5, 70?
Think about it. Tell me. 70. Well done. 257 LCM would be 70. Okay. So that means the HCF of 1 by 2, 2 by 5, and 6 by 7 is given by 1 by 70. In the same way, what if in the same question I'll ask you to find the LCM? What you will do in that case? In that case, first of all, you will find the LCM of the numerator this time. And then for the denominator, what you have to find is just the HCF, right? No, guys, SCF of 257 is 1. That we know, right? That's not a problem for us. What about LCM of 126? 12 or 6? Think about it. LCM of 126. Is it 12 or 6 only? It's 6, guys. Yeah. So the LCM of the fraction would be what? For both the fraction, the LCM is gonna be 6. Not both the fractions. I will say that all the 3 fractions. Okay, got it? Let's move. Okay, give it a try. A question for everyone, and I'm giving you 2 minutes for it. Give it a try and solve it quickly. Waiting for the answers. Everyone has to tell me the answer. Not a difficult question. Just apply the formula and you solve it. Okay, I'm just asking about SCF. I'm asking you to find the LCM and SCF, both the things. Okay, it will not take a lot of time. Wait. Tell me quickly, fast. Okay, I think I should explain now. Okay, so look at this. First of all, let's try to find the LCM. LCM of 3 fractions, 54 by 9, okay, 60 by 17, and 36 by 51, right? That would be equals to, first of all, I'll find the LCM of the numerator, right? That is 54, 60, and 36. And then I will find the HCF of the denominators, and that is 9, 17, and 51, right? So what is the LCM of 54, 60, and 36, guys? Do you know how to find it? Tell me. I do the math. Look at this. 54, 60, and 36, right? First of all, it is divisible by which number? You can find the highest number absolutely. 6 कर रहे हो? 6, 2 से कर लो, फिर 3 से कर लो. हाँ, एक ही बात है. First of all, do it with 2, right? Sorry, I'm really sorry about that. 30, 18, right? Then you will do again by 3. You'll get 9, 10, and 6, right? Again by 3. So 3, and then 10, and then 2, right? Then you will get by 2. So you'll get 3, 5, and 1, right? Then a 3 again, and then a 5, right? So it's gonna be, if you multiply all of them, you'll get 5 into 10, 10 into 540, right? So LCM is 540. And what is the SCF? SCF is 1. Okay, so basically the LCM of these 3 fractions would be 540. Clear? Got it? Now let's try to understand the HCF. Okay, so HCF of the 3 again. Just a second. Yeah. So now to get the HCF, guys, what you have to do? You have to find the HCF of the numerator. That is 54, 60, and 36, right? Okay. And then you have to find the LCM of the denominator. That is 9, 17, and 51. Okay. What is the HCF of these 3 numbers? 54, 60, and 36, right? So कितना आएगा बताओ? 6 आ रहा है. 6 से divide, 6 सबको divide कर रहा है. Okay. We cannot get a number more than 6, right? Yeah, 6 is correct. And for denominator, you'll get 51 into 3. That is what?
51 into 3, yeah, 153, but you can solve it further, right? 3 से cancel कर दो ना, 3 3s are 1 and 351, 2 by 51. So the answer is what, guys? It's 2 by 51, right? And this is how you get the answer. Simple है, कोई doubt, कोई परेशानी, बढ़े आगे, चलो फिर. So answer is 6 by 17. Wait. Seriously, what he's saying? 54 by 9, 36 by 51, whatever. SCF is 6 by 7. Wait, no, we got something else. 6 by 7, I think we wrote the question wrong, kya? No. Just a second, guys. SCF of 54, 60 and 36, right? Correct ही तो है, क्या गड़बड़ है? Wait a second, guys. $54 by 9, 60 by 17, ठीक है. 12 by 17, ठीक है. SCF of 6, 60 and 12 is 6. LCM of 117 and 17 is 17 ना. 6 by 17 आएगा फिर भी आंसर. एक सेकंड गाइस, देखो LCM इसका 17 आएगा यहाँ पर, राइट? यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया, but still the answer should be 6 by 17 for SCF. 6 by 17 आना चाहिए था आंसर. Just a second guys, just give me a second, okay? There is definitely some mistake that is there. एक बार देखना पड़ेगा क्या मिस्टेक हो सकती है. लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमारा सही है. चल क्या गड़बड़ हो गई यार. We are getting 2 by 51. They are saying 17 by this. 18 by 51 के हिसाब से. एक मिनट guys, एक मिनट. I'm not confused. What's the problem with that? What is the mistake that we made? Wait. 36 by 51. So 12 by 17, ठीक है. 60 by 17 and ये 6 by 1 है, ठीक है. एक बार इन्हीं के मेथड को चेक करते हैं. इनके मेथड देखते हैं क्या वो है. इन्होंने बोला HCF निकालें 6, 60 और 12 का. तो 6, 60 और 12 का HCF तो बिल्कुल सही है, यही आएगा. Because 60 by 70 was the bigger middle number. Yeah, that was correct. एक 3 बार 12 by 17, ये भी ठीक है यार. ना ये भी ठीक है, 9 आएगा, ये भी तो ठीक है. गड़बड़ क्या है फिर? HCF highest common factor of 54, 60 and 36 is 6 लिखा है हमने. 6 ही आएगा ना. 6 से करोगे तो ये 10 आएगा और 6 से करोगे तो ये 6 आएगा. हाँ यार 6 ही तो आएगा. और इनका जो है वो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज 3 क्या आएगा? 9 भी है ना, क्योंकि नंबर हमारे पास तो 9 है, तो 9 को सॉल्व करना पड़ेगा. तो 9 को सॉल्व करेंगे तो 9 और इसका 153 आएगा. यार ये सही तो है, फिर गलत तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर मेरे हिसाब से. 2 by 51 we are getting, they are getting कुछ और ही, something else. There's something fishy guys, definitely there's something definitely fishy over there. You need to understand what is the fishy thing over here. Not getting it. Yeah, what's the problem? HCF of the numerator divided by LCM of the denominator. 9, 17, 51 का LCM. Least common multiple of these numbers. 17 into 9 ही तो आएगा. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 17 into 3. What's the problem? Yeah, 54 is 54 हो गए. 60 कितना होता है? 36 होगा. 2 into 3 into 2 into 6. I'm by prime fraction. I'm not sure why I'm not getting the answer. That's why I'm doing it. Okay. So ये 2 into 2 into 3 into 5, right? So 2 is common. 1 3 is common. 6 ही तो है यार, फिर क्या प्रॉब्लम है?
क्या हो रहा है ये? I'm not sure, guys. I'm really not sure, but I'm getting this answer only. Probably the reason behind not getting the correct answer could be, I'm not sure about it, but we need to check about this, guys. So this should be in the final form, right? Like it should be in the perfect solved form. हम यहाँ पे इसको 6 लेते हैं, 60/17 लेते हैं, और let's say we were to organize that, after solving it we are getting 51, right? So 3 से cancel करोगे 17 times and 3 से cancel by 12 times, right? I will take the HCF of the numerator, okay, highest common factor. So 6 is their highest common factor. LCM would be 17. So the answer is हमारा 6/17. So I think that's the error, guys. That's what we have concluded so far. That whenever you are finding the LCM and HCF of these numbers, what you will do, you will first of all finally write in the final form, right? This is not correct in that way. Again, what I'm saying, first of all, solve it and then write it in the, I mean, like in terms of a prime number form, right? In the fractional form. P by Q, where P and Q are prime numbers. Okay, so not P and Q are co-prime numbers, I would say rather, right? And then you will use the formula, then you'll get the answer. If something is quite, different, that's what, I haven't told you actually, that's my fault, I would say. So we need to understand this thing, guys, that when you are solving the LCM on SCF, first of all, the number should be in their final form. So that means LCM में भी कोई गलती हो सकती है हमसे. Let's check the LCM also for the same thing, right? I'm doing it right now over here. So LCM निकालना है तीनों फ्रैक्शन का, तो LCM निकालेंगे हम 6, 60 और 12 का, and then we'll find HCF of 1, 17 and 17 का. HCF तो 1 आ गया, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आएगा? 60 आएगा सिर्फ और सिर्फ, right? 514 आंसर आएगा, ये भी कर दो क्या मतलब? Are you getting? That's interesting, यार. It's really interesting, and I didn't expected that interesting thing over here. So what is happening? Look at this, guys. Important that whenever you are finding the SCF and LCM, what you will do first of all, you will solve the number in their lowest form. Okay, that means you need to cancel. If something is getting cancelled, you need to cancel it. You need to make it in the form of P by Q such that P and Q are co-prime number, right? After getting to that step, then you will able to find the LCM and SCF, right? So over here there was a mistake. That mistake, I just got to know, and मैंने उस mistake को ठीक कर दिया अभी, ठीक है? तो यहाँ पे SCF कितना आएगा? 6/17 आएगा, and LCM would be 60. Okay, got it? Interesting. Yeah. You get out of this question now. You have to find the guys HCF, highest common factor of 4/9, 5/12, and 12/25. Yeah, you try. Think about it. Okay, let me explain now. Look at this. So you have to find the HCF, right? Simply what you will do to get the HCF, you will write, just a second. Yeah, you will write HCF of the numerator 4, 5, and 12, and then you will write the LCM of the denominator, right? That LCM of 9. It's not getting cancelled out, so let's take care of that thing if it is getting. Okay, that is the HCF of the number, right? So highest common factor of 4, 5, and 12 is nothing common. LCM of 9, 12, and 125, right? So that would be LCM, right? So that would be 3 into 4 into 25. So that would be 300, right? So answer the question is going to be 1/300. Fine. Let's move. Yeah. Now, guys, I told you that, on the basis of LCM and SCF, there has been some question asked in previous years in the CAT exam. This kind of question we'll be doing right now. So this is just a question you need to understand by the question only. There's not a lot of concepts is on there. Just the language question that we need to understand. Okay. Read the question once. A room is 4 meter 37 meter long and 3 meter 23 centimeter broad. The floor needs to be paved with a minimum number of square slabs. Find the least number of slabs required for the purpose, right? So if I write the length, I can write as 437 centimeters, and the breadth I can write it as 323 centimeters. Right? I hope you're getting how I'm writing it. No, 1 meter is 100 centimeter, na? 1 meter is 100 centimeter, right? So basically 4 meter would be what? 400 centimeters.
Okay, so 4 meter and 37 centimeter will become what? 437 centimeters, right? In the same way, you have 3 meters, that would be 300 centimeters, because 1 meter equals to 100 centimeters, right? So basically 3 meters already is there, plus 23 centimeters also you are adding, that means 323 centimeters, right? Think about it now. There is a room, okay, whose 2 dimensions are given to you. ज़्यादा डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बनाए, क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा कर दिया हमने गलती डायग्राम के अंदर, ब्रेथ बहुत ज़्यादा कम कर दिया। इतना भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, मतलब इतना ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। द डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दिस, थोड़ा बड़ा तो रहेगा लेकिन इतना बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है, लाइक दैट, ओके। दिस इज length is more, that is 437, and this is 323, right? So the floor needs to be paved with the minimum number of square slabs. Find the least number of slabs required for the purpose. So ऐसे यहाँ पे slabs होंगी ना, square slabs होंगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है? तो वो आपको जो slabs होंगी, कितनी minimum number of slabs होती हैं आपको बताना है। I'll give you a hint. Find the HCF of 437 and 323. Give it a try. करो try करो। एक्सप्लेन करूं? देखो फिर इधर इसमें क्या था कि आप लोगों ऐसा बोला भी कि 437 एंड 323 का आपको निकालना है एचसीएफ, तो वो आया था 19, ठीक है। तो होगा क्या, असल में आपको बताता हूं मैं। जो ऐसा होगा कि यहाँ पे जो स्लैब्स रखनी है, हमें स्लैब रखनी है ना, स्लैब्स ऐसी रखनी है कि स्लैब्स जो होंगी ना वो दोनों का मल्टीपल होंगी, इस टाइप की स्लैब रखनी है हमको, है ना, राइट। तो बेसिकली लेंथ के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्लैब्स आ जाएंगी और ब्रेथ के अंदर भी कुछ नंबर ऑफ स्लैब्स आ जाएंगी। कितने नंबर ऑफ, देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, 370 होता है, सॉरी, ठीक है। तो आपकी जो स्लैब होगी ना, he is asking the dimension, he is not asking dimension of the slab actually, he is asking this only, right? So say slab जो होगी वो होगी 19 की, because 19 का क्या है, HCF है, right? So एक स्लैब आ गया क्या, 361 की, राइट। अब एक स्लैब का एरिया है वो है 361 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे फिगर का एरिया कितना है, 437 इंटू 323। एक स्लैब का कितना है, 19 इंटू 19। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, नंबर ऑफ स्लैब मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पूरा एरिया आपको पता है, इसमें एक स्लैब का एरिया इतना है, तो 2 स्लैब, 3 स्लैब, 4 स्लैब, 5 स्लैब, 6 स्लैब, ऐसे बहुत सारे स्लैब्स आएंगी। और टोटल कितना एरिया कवर करेंगी स्लैब्स, एक स्लैब, जैसे मान लो n स्लैब्स हैं, टोटल एरिया कितना कवर करेगी स्लैब, नंबर ऑफ स्लैब्स इनटू area of one slab, and that has to be the area of the whole thing, and that is 437 into 323, right? So basically what we did, first of all, we got the HCF of 437 and 323. Why we are finding the HCF? Because we need to find a dimension such that it is dividing both the length and the breadth. Okay, after that कुछ भी number of slab निकालना is not a big deal, right? Dimension of one slab, or I'll say area of one slab into number of slabs equals to area of the complete the box or something, whatever is given to us, fine. The path, okay, clear, fine. Find the greatest number which will divide, okay, which will divide 3959, 4082 and 4164, leaving the same remainder in each case. Think about it, think about it. सोचिए सोचिए सोचिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है फॉर श्योर, इफ रिमेम्बर गाइस। हाँ बिल्कुल पहले करवाया हुआ है मैंने, याद करो याद करो याद करो। बताऊं, बता दूं, देखो समझो बात को। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्या करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीस थ्री नंबर्स विल फाइंड, ओके। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ओके, देखो एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है, और डिवाइड जब करेगा तो ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट सेइंग कि द रिमाइंडर शुड बी 0, ही इज सेइंग देयर शुड बी अ रिमाइंडर बट सेम इन ऑल द केसेस,
द रिमाइंडर शुड बी सेम इन ऑल द केसेस. गेटिंग इट? देखो पहले आप फाइंड आउट करो HCF ऑफ all the three numbers 3959, 4082 and 4164. देखो फर्स्ट टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है. 18 और 5 23 26. ओके okay. 3959 is a number which is not divisible by a lot of numbers, right? So we need to find the number by which it is divisible. Actually, that's important to find over here. 3959 is not divisible by 2, definitely not divisible by 3 as well, not divisible by 4, 5, definitely not 6, not 7. 11 से तो नहीं है. देखो ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे ना. 18 माइनस 8 नहीं है 11 से. तो 7 से हो सकता है क्या? नहीं, 7 से भी नहीं है. 7 से भी नहीं है. 8 9 10 11 13 से हो सकता है क्या? 13 से भी नहीं है गाइस. आई थिंक 17 से है. एक बार चेक करते हैं. देखो 3959 को डिवाइड बाय 17 करो तो कितना आएगा? 2 7 34, 34 एंड देन 5 विल बी रिमाइंडर. 51 के बाद 4. 17 से भी नहीं है. तो 19 से भी नहीं है. मतलब बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला मेथड यूज करना ज्यादा सही नहीं होगा. एक काम करते हैं, दूसरा मेथड यूज करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि यार आपने बोला है कि नंबर डिवाइड करेगा, तो लेट से जो नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर है, मान लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो k है. तो बेसिकली 3959 क्या होगा? समथिंग टाइम्स k, p टाइम्स k प्लस सम रिमाइंडर आएगा r. और 4082 भी क्या होगा? k इंटू समथिंग होगा. k इंटू p1 ले लेते हैं, या p1 या p2 कर लेते हैं. ठीक है. और यहाँ पर रिमाइंडर सेम ही होगा बिकॉज इस साइड की सेम रिमाइंडर आएगा. और 4164 भी क्या होगा? बेसिकली वो होगा p3 टाइम्स k प्लस रिमाइंडर, तो फिर भी सेम ही आएगा. राइट गाइस. अब एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले इन दोनों इक्वेशंस को. ठीक है. तो कितना आएगा? जो आपके आएगा 9 and 3 12 और 6 and 2 8 और यहाँ पे आएगा 1. 123 जो है ना वो है आपके पास p2 माइनस p1 इंटू k. ठीक है. अब 123 जो एक नंबर है, एक्चुअली 123 क्या होता है? 123 होता है आपके पास डिवाइड बाय 3 करोगे तो 3 इंटू कितना आएगा? देखो 3 इंटू आएगा 41 है ना. तो ये जो है आपका ये p2 माइनस p1 इंटू k. इसमें से एक p2 माइनस p1 है और एक k के इक्वल है. कोई बात नहीं, इसको अब k कौन सा है, p2 माइनस p1 कौन सा है, वो कैसे पता लगेगा उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको मेथड. डोंट वरी अबाउट दैट. देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? देखो आएगा 2 और यहां से आएगा 8 8 एंड बेसिकली यहां से आएगा तुम्हारे पास 8 और 8 आएगा ना. 82 आ रहा है. राइट. 82 जो है वो है आपके पास p3 माइनस p2 टाइम्स k. अब हो गया आपका सॉल्व. देखो समझना बात को. यह आएगा 41 इंटू 2 इक्वल्स टू p3 माइनस p2 इंटू k. आगे फैक्टराइज ये होगा नहीं. अब आप इन दोनों को कंपेयर करो बस. यू विल गेट टू नो जो वैल्यू ऑफ k ना. देखो एक चीज दोनों में कॉमन है, वो है k. और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक चीज दोनों में कॉमन है, राइट हैंड साइड पे भी एक चीज दोनों में कॉमन है, और वो है k. सो k कितना आ गया? बेसिकली 41 आ गया. और k क्या था? k वो नंबर था जिससे हमने इनको डिवाइड किया था. राइट. बिकॉज वी रोट दैट 3959 is p1 times k plus r. What I used that divisor into quotient plus remainder, right? Dividend equals to divisor into quotient plus remainder. In all the cases, the quotient was 41. First case, divisor was p1. Second case, it was p2. Third case, it was p3. And remainder was same, right? The answer is 41. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? हाँ. अब इसका एक और मेथड इन्होंने बताया है कि सब्ट्रैक्ट क्या नंबर्स को आपस में जो नंबर आया उसका निकाल लो. वही सेम मेथड है जो मैंने हमने बताया. मेथड सेम ही है ऑलमोस्ट, नॉट डिफरेंट. मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, इन्होंने आपसे शॉर्ट ट्रिक बता दिया. शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि इस केस में क्या करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है. 3 नंबर आएंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक ये आया, 1 is this and 1 this. इन तीनों का निकाल दो आप HCF. That's gonna be your answer, right? So if someone is saying that there are 4 numbers, okay, and there is a highest number which divide all of the 4 and the remainder is same, then क्या करोगे? उन चारों को सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में. ठीक है. जितने भी नंबर आएंगे उन सबका फिर बाद में HCF निकाल दोगे. यहाँ पे 3 थे, तीनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया. डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे बिगर माइनस स्मॉलर ही करेंगे, वो तो हमें याद ही है. उसके बाद क्या किया? बड़े में छोटा हमने सब्ट्रैक्ट किया और जो नंबर आए हैं उन सबका निकाला है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ओके. 41 आ गया. So the highest common factor in that case would be 41. Got it, guys? Is there any doubt about that?
Let's move. Fine, perfect. A merchant has 3 different type of milk, 324 liter, 351 and 450. Find the number of cask for equal size that can store the milk without mixing. मतलब बेसिकली आपको फिर से एचसीएफ ही फाइंड आउट करना है. समझ में आया क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को ये, ठीक है? So let's try to find the HCF of these 3 numbers. 324 का HCF निकालना है, 351 का एंड 459 का निकालना है, राइट? देखिए आप लोग, तो एक्चुअली 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है, वी नो दिस थिंग, राइट? तो ये लिखा हुआ है. अच्छा, HCF निकालना तो आप सीधा चलो फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर लेते हैं ना. 324, 351 and 459. Okay, order divided by 3, so 108, okay, and 117 and 153, right? फिर डिविजल बाय 3 करोगे और ओके, फिर डिविजल बाय 3 हो रहा है. नाइस, इंप्रेसिव. अब नहीं होगा, राइट? अब कुछ भी नहीं आ गया, हमें कोई मतलब नहीं है. एचसीएफ आ गया 27. सो बेसिकली अभी मीडियम नंबर ऑफ कास्ट नहीं है, क्योंकि कास्ट तो तब आएगा जब 324 डिवाइड बाय 27 करोगे, 351 डिवाइड बाय 27 करोगे और 459 डिवाइड बाय 27 करोगे, राइट? अभी हमने कास्ट, नंबर ऑफ कास्ट की बात नहीं की. अभी हमने ये बात करा कि उस कास्ट का साइज क्या होगा. कास्ट का साइज होगा 27 लीटर्स, ठीक है? अब 324 डिवाइड बाय 27 करो, नंबर ऑफ कास्ट फॉर फर्स्ट आ जाएगा. नंबर ऑफ कास्ट फॉर सेकंड निकालने के लिए 351 डिवाइड बाय 27 करेंगे, एंड नंबर ऑफ कास्ट फॉर थर्ड निकालने के लिए 459 डिवाइड बाय 27 करेंगे. तो वहां से टोटल नंबर ऑफ कास्ट आएगी, उनको हम लोग ऐड कर देंगे. गॉट इट? ठीक है, ये देखो हमने ये किया इसमें 27 के बाद उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया टू गेट द नंबर ऑफ कास्ट. क्योंकि ऐसा है ना यार, ऐसा है कि जो साइज है कास्ट का वो होता है उसका एचसीएफ, वो हम यूज कर रहे हैं 27. अब पहले वाले के लिए नंबर ऑफ कास्ट डिफरेंट है, सेकंड वाले की नंबर ऑफ कास्ट डिफरेंट है, और थर्ड वाले के लिए नंबर ऑफ कास्ट डिफरेंट है. ऐसा है कि इस बॉटल का जो है ना, बॉटल के वाटर को मुझे डालना है, एक ग्लास ये है और एक और ग्लास जो है मेरे पास वो ये है, राइट? दोनों के डायमेंशन सेम है. तो इस बॉटल का कुछ वाटर इसमें आएगा, कुछ जैसे लेट्स से मान लो बॉटल के अंदर 10 है और ये भी 5 का है और ये भी 5 का है, तो बेसिकली एक के अंदर भी 5 आएगा और इसके अंदर भी 5 आएगा, राइट? दोनों के अंदर 5 आ जाएगा ना, तो 5 इसके अंदर पोर करूंगा, 5 इसके अंदर पोर करूंगा, ऐसे ही है. तो जो 324 का जो वो हमारे पास एक बकेट है, एक जो हमारा जार है जिसमें मिल्क स्टोर्ड है, उसको रखना है हमें 27 लीटर के कास्क के अंदर. कितने कास्क यूज करेंगे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है. 27 का एक कास्क है, तो 324 डिवाइड बाय 27 करके नंबर ऑफ कास्क आ जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ मिल्क, देन सेकंड टाइप ऑफ मिल्क को अंदर थर्ड टाइप ऑफ मिल्क के लिए आ जाएगा. ठीक है, गॉट इट? बहुत बढ़िया. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन है. आज हमने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए क्लास में काफी सारे. तो अभी ये 3 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए. इन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कीजिए आप लोग और होमवर्क में इनको कीजिए सॉल्व, ठीक है? और एज आई सेड गाइस कि इस चैप्टर में डेफिनेटली बात है यार कि सॉल्यूशन भी दिख गए आप लोगों को, सॉरी आंसर दिख गया मतलब, ठीक है? तो इसमें हाँ अच्छे क्वेश्चन हैं. एक बात ध्यान रखना कि जब भी 2 चीज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी आज. पहली बात तो हमने देखी एचसीएफ और एलसीएम निकालते कैसे हैं फ्रैक्शंस के, राइट? तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, we need to find the HCF of the numerator divided by LCM of the denominator to get the HCF. To get the LCM, we need to find the LCM of the numerator and HCF of the denominator. लेकिन वो उनके फाइनल फॉर्म के अंदर फाइंड आउट करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद करते हैं. बेसिकली P by Q फॉर्म होती है where P and Q has to be the co-prime numbers. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, जब हमने ये किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पे एडवांस प्रॉब्लम्स थी, उसके अंदर जनरली वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ, राइट? एक हमने अच्छा मेथड सीखा, एक शॉर्ट मेथड सीखा बेसिकली, कि अगर हमें 3 नंबर दिए हुए हैं और ये पूछा गया कि फाइंड द नंबर व्हिच विल डिवाइड द हाईएस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर which will divide all of them and give me the same remainder, then क्या करते हैं, उन तीनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी आएगा उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ एंड वी गेट द आंसर. ठीक है, चलो फिर आज के इतना ही है. बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ. पीएनसी का कॉन्सेप्ट है वो, बहुत मजा आएगा उसको पढ़ के. ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में. बाय.